सीधी, फिर आएगा स्ट्रेच, अब पकड़, ये आया स्ट्रेच, बैठना नहीं, टांग से Alright. We'll come back to this, but slowly come up, very slowly, and then go the opposite way. Counter करना बड़ा जरूरी है. Now, let's see how many people can do this now. ये हाथ रखना आपने, और ये अपना आपने यहाँ पे इसके ऊपर रखना है आपने, and then you. ये साथ सब कर लेंगे. This is a difficult one. ये प्रैक्टिस बैलेंस चाहिए. अच्छा आ जाए. Something else. Balance. Now अपनी try not to tilt, not like you can either ways. What you can do is पहले अपनी लेफ्ट फुट को या जो फुट नीचे है उसको थोड़ा स्टेबलाइज कर लिया, उंगलियां नीचे जमीन पर जरा सेटल कर लें. ठीक है. So focus, breathing. Now slowly start raising it. पीछे की तरफ, उठाएं इसको ऊपर की तरफ, पाँव को, टांग को. Ankles are good. This will give you a lot of focus if you do balancing. So balancing very important is the other side also. इसका काउंटर कर लेते हैं. इसका काउंटर बैठ जाना है. हम तो स्टॉप नहीं कर रहे. Okay. Next, balancing again. Other side. इसमें बैलेंसिंग जो भी हो ना तो अच्छा बैलेंस है. जो भी हो, keep your focus on one point. When you keep your focus on one point, it's easy for you to focus. As in line. Good. और करना है अभी थोड़ा सा करना है. Which muscle do you want to work on? एकदम यूजुअली ग्रोइन की करते हैं, वो बड़ी मजेदार स्ट्रेच. बैठ जो सारे. बटरफ्लाई कहते हैं इसको. ये आपने आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच करना है इसको. क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है. And this is also good for your sex life. हाँ, ये जीन्स के साथ नहीं है. इसको आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेचिंग को बढ़ाना है. हाँ. हाँ कर. बैठने का पार्ट है. हाँ. बैठना नहीं मसला. एक साथ पर दिखना है. सीढ़ियों. Okay. Very good. उसके बाद ये नीचे ले जाएं और ये look on the other side. Other side. हाँ. तो हमको चेक ऐसी महबूबा की तरह पंजाबी फिल्म की सस्ती कुंडली जवानी लग रही है. All right. Yeah. तुमने नारपा कितना चला गया. सारा टाइट पजामे का कमाल. लोग का सब कंट्रोल है ना पजामे में. अच्छा, आगे सीधी कर ले. All right. आगे सीधी कर ले सारे. And then back straight. और ये put your hands towards your knees like a back straight try, and don't move your hands, and flex your feet and raise the right leg a little bit. Breathe. बढ़ती है इसमें. गोटे अगर स्ट्रॉन्ग रखने तो ये हमेशा किया करें, इससे गोटे स्ट्रॉन्ग रहेगा. स्ट्रॉन्ग रहेंगे ये चलेगा. Very strong. नेक्स्ट कैल्शियम जाता जाए. Don't tilt back. Come forward. Always try and keep your back straight.
All right, now move the legs. ऐसे बताइए अब एक और भी सवाल हो रहा है. खासा और एक्सपेक्ट नहीं करता. Good. एक टांग नीचे ले आए. एक टांग पीछे ले आए. इतनी तो मथीरा भी नहीं करती. Then you go up. Go back. माशाल्लाह बेड़ा इधर को है. All right. फाइल तो पेमेंट मैं भी हो जाएगा. अच्छा, अब क्या करना आपने कि just go down like this. If you want to strengthen your ass. साथी साथ रेडी गए. All right. Now put your head here and just breathe. Just focus on your breathing. थोड़ा भी मिलेगा. कैसा? अच्छा, तो ये बैक से पहले सब कुछ कर लिया? All right, the other side. Come back the same way. दावत है. All right. नीचे बैठ जाओ. अच्छा, तो पैंट का मसला. इसमें आपकी लोअर बैक भी इस्तेमाल हो रही है. शोल्डर्स खींच रहे हैं ऊपर की तरफ. पुल योर आर्म्स अप. All right, now come down and rest there for a while. Keep breathing from your nose. If you want a great ass, this is the best way of doing it. All right? Hip joint भी खुलेगा. शुराफा की जुबान में Good. This maximum खींचता और नहीं हो. So you actually start. I started doing yoga when I was 50. तो कैसे कहते हैं? There are some discovering muscles which I had never discovered in my life. अब मुझे वो कहता है ना, ये पेन हो रही है, यहाँ पेन हो रही है, ये पेन हो रही है, फलाना हो रहा है. I know exactly which muscle to stretch. So एक बंदा आया मेरे घर पे, like my wife's nephew, so he came to my like in Dubai, तो like no market. कहता है कि यहाँ पे पेन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मुझे sciatica टाइप पेन शुरू हो रही है. मैंने उसको ये वाली करवा दी. अच्छा, ये किया ना हमने. So कहता है यार बड़ा मजा आ रहा है मुझे, really stretch हो गया एकदम से खड़ा होकर. कहता है यार फर्क पड़ गया एकदम से मुझे. मैं कहा पैराडोल खाने से बेहतर ये काम नहीं है. ज़्यादा sciatica शुरू हो गया. मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, लेकिन बड़ा करूँगा. ये शुभ वो टाइम इतना नहीं 15 मिनट. हाँ. Good. Enough. Now let's go back. A big hand for everybody. मजा आया? Yeah. तो उसमें से बैठ जाए. Very good. तो ये बात शुरू करते हैं. हैं? तो मैं सोच रहा था कि खाने के लिए डिस्कशन है. तो वहाँ लाइटिंग की और ये बताओ कि so much more lively environment. हाँ वही ना. आप कह रहे थे आइडिया अच्छा था कि हम यहाँ से नहीं करेंगे. हाँ बट वो फिर वो आगे नहीं मुश्किल हो जाएगा. उसके बाद ना दवाई का
टीम स्पिरिट वाली So do this every day. Morning में कर लें, कुछ कर लें, but seriously, always be stretching. Always be stretching. इससे आप लोग भी होते हैं यार, लाइफ जो है ना वो 10-20 साल आगे चली जाएगी. अगर अभी तुम 10-20 साल बड़ी लाइफ होती है, मैं 1-2 साल नहीं कह रहा. So people who reach that, 90 तक तो पहुंचना बहुत मसला है, कोई नहीं जो बंदा योगा करता है. My actual biological age is 135 years. What we eat, what we drink, what we inhale, smokes and everything, pollution and the stresses, they have brought down the lifespan of humans. Otherwise, the actual human body when it's born, it is supposed to live about 135 years. Imagine करिए हम कितना poison लेके आ रहे हैं. Stress is the biggest killer. So stress को counter करना जो है ना बड़ा जरूरी है. अब देखो हमने बॉडी को क्या किया. स्ट्रेस कहाँ पे होता है? स्ट्रेस हमारी माइंड में होता है कि बॉडी में होता है. कहाँ पे होता है स्ट्रेस? स्ट्रेस माइंड में क्रिएट होता है और जाके बॉडी में जाके बैठ जाता है. अभी वो अच्छा पीड़ हो रही है, शियाटिका हो रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, उसको भी करते शुरू हो रही है. तो इसलिए वो अपने आप को स्ट्रेच करते रहेंगे, जब अपनी वो करते हैं तो वो स्ट्रेस निकलता रहेगा. वरना वो स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है. बॉडी की लिमिट है ना उस स्ट्रेस को अब्सॉर्ब करने की. सो वो तो निकाले ना जो स्ट्रेस हमारा जो आ रहा है एक्यूमुलेट हो रहा है. बिकॉज दैट इज देन किलिंग अस. The causes of cancer, the causes of all the diseases and everything that is happening in our life. We eat so much junk food. नान खाते हैं हम लोग, white sugar खाते हैं, salt कितना खाते हैं, fizzy drinks कितना पीते हैं हम लोग. तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए लाइफ में ठीक है, अगर करना है वो करें, ये नहीं करना ना करें, लेकिन उसका काउंटर तो करें ना. काउंटर के बगैर ये होगा कि then you are and you want. सबसे बड़ी रीजन क्या है एक्सरसाइज करने की? पहले मैं कहा करता अपने बच्चों को कहता था, अपने बहन भाइयों को कहता था यार एक्सरसाइज करो. मैं कभी बात करता था, मैंने कहा यार कोई मेरी घर नहीं सुनता. चलो यार मंकी टू लीड का एग्जाम्पल करो. ये उन्होंने करना कर लेंगे. मैं अपना शुरू हो गया. करते करते मेरा छोटा भाई अमेरिका में होता है, तो वो वेरी वेरी हाई पोस्ट, टेस्ला कार भी उसके पास है. तो ही वाज टर्निंग 50. तो मैंने उससे कहा तेरी लाइफ चेंज हो रही है 50 पर. अगर तुझे अपना कुछ फिट ना रखा तो दैट विल गो डाउन और इट गो अप. उसने माउंट किलिमंजारो में जाके 3 महीने पहले उसने जाके कॉन्कर किया एट द एज ऑफ 50. एंड सो ही बिकम वेरी फिट इन हिज लाइफ. सो मैं चलो ठीक है, कहने से तो करनी पड़ता है, बनी छोड़ दें. तो अगर चाहते हैं आपके बच्चे भी एक ग्रो हो और उनकी आदत बन जाए, अभी से एक हैबिट पैटर्न उनका बिल्ड हो जाए अभी से, तो अभी से उनको ये कराएंगे आप तो आगे बात बनेगी ना जाके. सो अपने लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए. And secondly, you want to enjoy your children when they grow up, and you want to enjoy your grandchildren when they grow up also, right? So why do you उस वक्त जाके बेबसी का आलम हो जाएगा यार, जिस पर ख्याल नहीं करता. असि वो दौड़ से लगे रहे, रैट रेस से लगे रहे, लेकिन असि यार अपना जरा जिंदगी ज़ाया करती है. So nothing is worth. लोगों के बड़े बड़े बैंक बैलेंस होते हैं, लेकिन वो जिंदगी का बैलेंस भी नहीं है. ये बड़ी सी बात. बैंक बैलेंस होते हैं लेकिन जिंदगी बैलेंस कोई नहीं है. सो यू मस्ट ब्रिंग आउट, स्पेशली व्हेन यू गोइंग इनटू, यू आर नाउ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. एक तो ये कि स्टॉप सेइंग कि ठीक है हाँ ठीक है, आई विल आस्क द मैनेजमेंट एंड देन लेट यू नो, बिकॉज यू आर द मैनेजमेंट. इफ यू से कि यू आर नॉट द मैनेजमेंट, दिस मीन्स यू आर सेपरेटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द मैनेजमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप डूइंग दैट इन योर माइंड एंड इन योर वर्ड्स. अच्छा, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू एंड ट्राई एंड गो टॉक टू योर मैनेजमेंट. Don't tell your juniors that you're going and fighting for them, but go and fight for your juniors with your management. As if you are one team. Certainly we have a problem. Don't say, sir, I have a problem, or this person has a problem. Say, we have a problem. When you start with this approach with the management, we have a problem, we need to solve, I need your help to solve this. Okay, what is the problem? Sir, this is the issue. So you are a part of management. ठीक है? ये बात खत्म आपसे कि चलिए कहानी के मैनेजमेंट के पास जाएंगे हम. Management is not Aga. Management is not Fawad. Management is not Ali Raza or anybody else or something. You all are management. Junior से पूछो ना किसी से, driver से पूछो ना आपने किसी से जाके. यानी who does he consider management? He considers all of you management. So management के अंदर ये कहानी अपना stresses आएंगे, उसके लिए निकालने के लिए exercise चाहिए. So good. You guys enjoyed this? Yes, sir. Yeah. ना ही छोड़. Habit
हैबिट्स जो है ना वो पहले एक बार ज़हन में रखें चलिए कि वो गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स। तो ये देखें चलिए कि हानि के अगर आप मैंने एक बार ये पूछा, मैं रेकी का कोर्स कर रहा था मैं, तो मुझे मेरी जो टीचर थी रेकी होती ना, एनीबॉडी नोज व्हाट रेकी इज? हीलिंग पावर्स लाइक सो यू सॉर्ट लाइक हेल्प, एवरीबॉडी हैज हीलिंग पावर्स। आपको कट लगता है तो कुछ अर्से बाद हील हो जाता है ना, वो कैसे हील होता है? वो बॉडी के अंदर मैजिक है ना कोई अपने आप को हील करने का, तो हर एक के अंदर है हीलिंग पावर्स। आपको जुकाम हो जाता है वो हील कर जाता है, डॉक्टर को लान जान दी लोड़ी को नहीं, छोटी मोटी चीज़ें वास्ते कट शट लगता है, ठीक है वो एंटीसेप्टिक लगा ले, कुछ कर लेगा, कट लगा, बट इट हैज ट्रेमेंडस हीलिंग पावर्स। So Reiki, we all have healing powers. We also have the healing powers to heal ourselves, and we have the healing powers to heal other people also. Intention and belief, ये दो चीजों में काम करती है। Intention, दुआ के अंदर intention ही है ना, दुआ के intention ही है। तो उस दुआ का क्या फायदा जिसमें हम believe ही नहीं कर रहा? तो belief भी बड़ी important है उसके साथ साथ। उसमें अच्छा अल्लाह मियाँ मुझे ये कर दे, अल्लाह मियाँ ये चीज़ कर दे, और उसके साथ डाउट भी आ रहा नहीं यार पता नहीं मुश्किल है, पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन और उसमें मैं ये शक डाल रहा हूँ तो शैतान डाल रहा हूँ उसी दुआ के अंदर। तो पहले तो belief करना बड़ा important। So this is the basic things about it. So healing powers one another. तो रेकी तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा I smoke, so what do I do? कहती है कि आप keep smoking, but do it consciously. Very important. To do whatever you want to do, but do it consciously. नीचे बैठो, इधर बैठो ना जैसे। मैंने कहा ठीक है, so I was smoking cigarette. When I'm smoking a cigarette, अच्छा I'm smoking a cigarette. ये नहीं कि दिमाग की ऑन चल रहा है और मैं सिगरेट ब्लाइंडली पिए जा रहा हूँ, अच्छा कॉन्शियसली पीना शुरू हुआ। फिर मैंने अपने आप सवाल नेक्स्ट लेवल पे मुझे मेरी आई आफ्टर अ फ्यू टाइम्स, यार व्हाई एम आई स्मोकिंग अ सिगरेट? यार आई एम स्मोकिंग अ सिगरेट बिकॉज आई वांट टू स्मोक टोबैको एंड निकोटीन। नेक्स्ट आई दिमाग में बात, देन व्हाई आर यू स्मोकिंग पेपर एंड फिल्टर एंड केमिकल्स? Then smoke only tobacco. मैं कहा चलो यार, I used to smoke pipe once about 10-15 years ago. Why don't I start smoking pipe? So I left the cigarettes and I started smoking pipe. So in my mind, that's the lesser of the two evils. All right. Okay. But yeah, but not as much. Yeah, it's a bad habit. It is not a good habit. As long as you are aware that you are doing a bad habit, and you have a desire that you want to overcome this habit, don't let a habit overcome you. So you cannot change a bad habit. This is a false notion before कि चलिए कि पहले मैं भी used to think कि you can actually overcome your bad habit. You cannot overcome a bad habit. The bad habit, any good habit or a bad habit is already a part of your. There is a basal ganglia is the name of that storage capacity within your brain, which is cerebral cortex जो आपको होता है, the active thinking brain. So when you're doing something new, so that your thinking brain is activated. But when you repeatedly do something, so this information is stored in my basal ganglia, which is the storage room, the inventory room. So if I've done something repeatedly before, so then I don't need to actively think. My RAM memory is relieved so that I can concentrate on more important things. So that's the way the human brain works. And the basal ganglia does not know, the storage capacity does not know whether I am trying to satisfy a good habit or a bad habit. So you cannot, once the storage goes in of my patterns of a behavior, so there are people who have quit smoking for 30 years, but ask them, वो कहते हैं अभी भी वैसी ही अर्ज होती है उनको पीने की सिगरेट जैसे कि उनको 30 साल पहले होती थी। So this means that you cannot overcome a bad habit, but you have the power of putting in and injecting new habits which will overpower the bad habits. So think about replacement. If you want to overcome this habit, then what replacement are you looking at? So what do you want to do? And in bad habits, there are also triggers. Become aware. Step number 1 for you for the next 90 days. This is something new because I'm writing this book and I wrote a chapter on habits. So for the next 90 days, so what you do is you become aware of the triggers. Habits को trigger करती हैं. क्या चीज़ करती है? Habit is a routine, is a procedure, right? So habit is a routine and a procedure. So what happens is when I see a pack of cigarettes, I feel the urge to smoke. Or if I see something like which I'm doing, या वो spirit गल हो रही थी, तो सामने spirit की बोतल पई है तो मैं दिल कर रहा है spirit थोड़ा जा. So what I'm saying is कि all these habits, so they have triggers. So your job is to start becoming aware of the triggers that are happening around you. Don't try to change the bad habit in the first step. Just become aware as to which triggers are leading you into that routine of the habit.
एक हैबिचुअल पैटर्न चल रहा है ना आपका, जो एक लाइक पैटर्न ऑफ बिहेवियर चल रहा है, पैटर्न ऑफ, सो एज सून एज द ट्रिगर इज, so the trigger takes place, which is the cue, so it automatically takes you into, so don't go into this blindly, go into it consciously to start with. So I've created this illusionary tool. So what you need to do is you need to activate your trigger identification mode. So what is the trigger identification mode? So the trigger identification, so the trigger identification mode is जिस तरह आपका self correcting mechanism है ना आपका दिमाग में कि यार Zen, do this, don't do this. There is a self-talk going on in your mind, right? All right. So उसी तरह से आप ना इस तरह भाजो तरह audience भी आ जाएगी तरह, तो keep changing your shape. आप थोड़ा सा इधर आ जाएं, थोड़ी सी लाइट आ गई। हाँ जी। So yeah, better. So trigger identification mode. So what is it? तो इसी तरह से self correcting mechanism का कोई रिश्तेदार है जो क्या उसको आप कह रहे हैं कि वो आपका trigger identification, तो उसको आप एक्टिवेट कर रहे हैं. So trigger identification mode, TIM. So meet Tim. Create an illusionary tool in your mind. It could be a cartoon character. What cartoon character comes to your mind? Popeye. Mickey Mouse. Popeye. Whatever. ठीक है? Doraemon. Okay. Spider-Man. Good. Very good. Spider-Man can also tell you, yes, ये trigger आया. All right. So now Tim's job is to identify the triggers for you, to bring it to your awareness. So develop a relationship with Tim in the next 90 days by just observing as to what signals Tim is sending you. Don't go into a habit blindly, but become aware that a trigger has been activated and you are now going in deeper into that habit mode. So just become aware your trigger is happening now. What are you doing? You are helping your mind to reprogram itself rather than following blindly into the routine. Every single thing that you do in your life, which you have done, and unless you're doing something new, you travel to some new place or something, then, but otherwise every single thing that you're doing, it's a habit. From the moment you get up in the morning, from the moment that you are coming out of unconscious state from the sleep into the waking state, as soon as the active brain, conscious brain is working, so there is a habit pattern of the brain, which is that you are searching for a worry. You're searching for something to worry about. Something to worry about. होता है ना दिमाग में बात आती है, तो भी एक habit pattern है. So become aware of that habit pattern also. Right? बल्कि this is a joke also. Like a few years ago when I was worrying about bills and I was worrying about problems or something, जब भी कोई negative ख्याल आया तो मेरी my wife Zaufy, she's an amazing person. So she says, "Auz billah पढ़ लिया करो." मैं कहा अच्छा, जैसी कोई negative बात है तो auz billah. सामने वो था वो एक वो बाथरूम जाते हुए रास्ते में एक वो बाथरूम जाते हुए what happened इसके साथ वो हमारे रेंट की जो चेक्स ड्यू होते हैं ना, तो उनके ऊपर वो 2 के ऊपर टिक मार्क्स लगे हुए थे, 3 के ऊपर टिक मार्क्स नहीं लगे थे कि ड्यू है ऑन दिस डे. बाथरूम जाते हुए रास्ते में देख रहा हूँ तो मुझे पॉटी भी नहीं आ रही थी. तो वो परेशानी, हाउस बिल्ला मैंने पढ़ना शुरू किया, अच्छी कहानी की ये परेशानी ना आए मुझे, तो वो दैट स्टार्ट गेटिंग वॉश्ड अप. व्हेन आई एम गेटिंग अप इन द मॉर्निंग कोई नेगेटिव ख्याल आ रहा है, हाउस बिल्ला पढ़ ली. यार अल्लाह पे छोड़ दो यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा. जहाँ हमारे पास फेथ है तो फेथ को इस्तेमाल करो ना फिर यार, उसको इस्तेमाल करो. फायदा क्या उस फेथ का, जब इतना हमने रिलीजियस होना है, इतना स्पिरिचुअल होना है, जो फेथ ही नहीं है तो फायदा क्या उस रिलीजन को फॉलो करने का. सो यू हैव टू डेवलप दिस फेथ इन योर ओन सेल्फ ऑल्सो. इच्छा जी की हानि का हैव टू करते 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 क्या हुआ कि मैंने अपना पैटर्न तोड़ा ऑफ द वरिंग हैबिट. सो दैट वाज स्टेप नंबर 1. कि चलिए कि बिकम अवेयर ऑफ द ट्रिगर्स दैट हैपन अराउंड यू. सो व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग तो बाथरूम जाके सब कुछ ठीक हो गया. वो भी so you have to break the pattern. How do you break the pattern? By first becoming aware कि ये pattern is about to set. Good habits, bad habits. The basal ganglia does not know whether you are. So anytime a trigger takes place, it is going to create an urge to satisfy a certain habit. Habits are built like, imagine yourself walking on grass. You walk the first time on grass, तो छोटे से
second time, third time, fourth time, 100 times, तो एक पाथ सा बन गया ना, पगडंडी बन गई एक आपकी, right? Slowly, over a period of time, this becomes a huge highway. Huge highway means anytime a new sensory input comes to your mind through your 5 senses, it is going to fall into the highway. So the highways that I have, my mind has built up over a period of time because of my habits, those will dominate my mind. So if my worrying habit is a highway, then anytime a new signal comes, a new memo comes from the office, or somebody, a new gossip comes, or I read a new newspaper, that news is going to fall into that highway. That's how our minds work. So what you need to do is you need to create new highways, which are more positive highways. We live in a culture which does not develop positive highways. We are always looking at things to worry about. Depression हो गया, worry हो गया, मुकेश से लेके मिर्जा गालिब तक से लेके मुकेश तक, वो जो है ना रोना धोना, romance complete नहीं होता तो बंदा रोए ना. हमें तो so we have grown up with misery. We love misery, but we don't know how to enjoy our successes for now. So your job with your families and your people is to spread happiness, and love. That's your main job, because with great power comes great responsibility. So cultivate this. You're on the right track. MashaAllah, you've done well in your life. By you are now a part of the pillars of the organization at Kansai. And the owners of the organization and the senior management is very happy with your progress, which is why only 10 very selective people are attending this very expensive course. ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं यार और बंदे पा दो, मैक्सिमाइज करो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, ताकि पर पर्सन कॉस्ट कम हो जाए. वो पर पर्सन कॉस्ट करते करते क्वालिटी गेट्स कॉम्प्रोमाइज. सो दिस वाज माय सजेशन कि यार इफ यू रियली वांट टू बेनिफिट, डोंट पुट एनी एक्स्ट्रास इन देयर, put the absolute people who are really you want to develop for the next level. So the management has very high hopes from your level. Not only will you be good in what you are doing, but also be able to delegate your responsibilities to the next level. And the training that was given to you by the senior management to bring you to this level, it's time for you to pass it on. So let's go back to the U-shape now, and we'll discuss leadership over there. Okay? Thank you guys. Thank you, sir.